Farhad, can you start? When you are talking, okay, I can. When you are talking about activities as in client engagement activities, right? Yes. Okay, ma'am. So, with respect to today's topic, first of all, what I do with respect to client engagement is, in the first meeting, I set the expectations very properly with respect to returns, with respect to timeline and answering of customers' queries, how we will go about it, what will be the mandate limit, and what will be the role of our employees. What if the employees are a little bit slow in reverting to the queries and all. So I just explained them in much detail so that most of these queries that keep on coming to your employees not reverting or something, तो पहले से ही मैं बोल के रखता हूँ कि काफी ज्यादा क्वेरीज आते हैं. So even if they reply after 1 day, please accept something like that. Then secondly, respect to mandate, the mandate limit क्या है वो मैं समझा के आता हूँ, so that when the employee goes to take a sign, तो उसके साथ discussion ना हो. Then I only take the e-signs in case it is decided कि डीमैट खोलने का है, तो मैं उनको वाइट ब्लैंक पेपर पे मैं खुद ही साइन ले लेता हूँ, सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन एंड माय एम्प्लॉय गोस, वो लोग रिलक्टेंट होते हैं साइन देने को. सो ऑल दी स्मॉल स्मॉल थिंग्स आई डू एंड देन they start the procedure of opening the demat. Then comes that we communicate more on the WhatsApp only group only, where we make a WhatsApp family group. Earlier I used to be a part of all these groups, but nowadays I'm trying to uh, uh, be out of these groups, because then I'm only getting into lots of queries and all. So the group is now only between the employees and the customers, where they follow up as to what has been discussed in the meeting, what has been finalized. दूसरी सबसे वो implement करने का, like change of broker and all, then to open a demat and all. So whatever is decided is pretty clear. It is put on mail to the customer, and accordingly they follow up. Then with respect to client engagement, we send them birthday wishes for sure. We send them some images, some videos, not very in a focused manner or something. And yeah, we are in regular touch with our customers, and I have done my own client categorization, according to which we try to run monthly campaigns. According means by taking one client categorization into picture. So sometimes we run on silver category, sometimes we run on gold category, something like that. So every month we try to run and do some activity or a campaign as per the client categorization. That's it. Who will be next? Rohit, can you share? Dipti, can you share? Okay, I can say that since I'm just 2 years in the field, I have a handful of clients, which at the moment I'm dealing with all of them myself and on a one-to-one basis. Because it's a small group of clients I attend to, I kind of know what each one wants. And whenever I find any good articles which I think would be of interest to them, I do share it with the particular client. Also, the activities we do in the sense of the images and the videos, I do sporadic, not really very constant, because most of the people get irritated, I find. And I just try and be specific to what I kind of recognize that what they require, right? I mean, I know the client on a 1:1 basis. So what is good for them, I will share it with them, and I keep in touch with them pretty regularly as of now. That's it. May I? Yes. Yeah.
मैं go. I'm audible. I'm audible. Right now you are audible. Yes. Okay. So as far as client engagement point of view, actually the process is almost same, but the how I engage the old clients as I have categorized like titanium, gold, silver. So as per the category wise, I have set some things जहाँ पे engagements higher category में ज़्यादा बढ़े. So first of all, जो भी higher categories है वहाँ पे what I have done is the whatever who is the my loyal clients and sometimes loyal clients को free services थोड़ा ये करता है तो मैंने उनका DP charges हटा दिया है as DP charges deducts from my brokerage only for the higher category. Second thing is I'm more specific. My consistent activities now is the goal sheet. मैं rather than valuation report or any return kind of return, I have sent regularly the goal sheet because almost 90% of my client has a goal sheet. तो अभी गोल शीट शेयर करने से काफी ज्यादा एंगेजमेंट हो रहा है क्लाइंट के साथ बिकॉज पहले खाली हाँ गोल शीट के साथ मैं मेल में आई हैव अटैच्ड एसआईपी शीट एज वेल कि करंट लाइव एसआईपी कितना जाता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि क्लाइंट की साइड से ही मुझे काफी रिस्पांस आने लगे हैं कि इस गोल पे अभी काम करना है या इस गोल के लिए हमको एसआईपी बढ़ाना है So the moment I am consistent with this goal sheet, I am looking at the change. That is SIP input value is getting increases from client side. And the activity also I do, like I earlier also said in CRM session that top 100 clients I am every year on a Diwali vacation. थोड़ा gift activities होता है जहाँ पे काफी एंगेजमेंट होता है विद क्लाइंट एंड अनदर थिंग जो टॉप 2 कैटेगरीज है वहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे होता है ना आजकल कोलैबोरेशन जो हो रहा है लाइक क्लाइंट रिक्वायर्ड सीए क्लाइंट को कोई और इश्यूज है कोई रियल एस्टेट एजेंट से कनेक्ट करना है तो वैसे थोड़े एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होके क्लाइंट को हेल्प करना ये थोड़ा यहाँ पे एंगेज हो जाते हैं क्लाइंट का मतलब एक ट्रस्ट फैक्टर बढ़ रहा है विद दीज एक्टिविटीज Okay. Who will be next? Kaushal? I'll go next, Rishit here. So engagement side, मेरा थोड़ा सा point of view different है. As far as दिवाली gift है concerned, होता क्या कि मैंने ये देखा हुआ है during my corporate life as well as कि दिवाली gift पे क्या सब लोग दिवाली gift देते हैं, तो वो वैल्यू नहीं आता है. So usually on दिवाली gift अगर मैं दूंगा अच्छा भी दूंगा, he knows कि भाई दिवाली है इसलिए मुझे इससे धंधा दिया and on that behalf he is giving it back to me. So usually I don't give it on Diwali gift, Diwali weeks or Diwali में ठीक है call कर दो, that is okay, but I don't give any gifts during Diwali. मैं during any as in any month में बीच में कुछ ना कुछ दे देता हूँ. It may be anything कि मेरा say 50 crores achieve हो गया, 100 crores achieve हो गया, इतना SIP book achieve हो गया, उसके भी आप मैं सब कुछ दे रहा हूँ. So it looks much more better, is what I feel. So ये मैं करता हूँ. Second thing, whenever पता है वो DSP का ये welcome letter होता है. Said, you know, thank you for doing this, thank you for partnering with us, आपकी ये responsibilities है. So I was same copy pasted with my logo, मैंने पूरा बनाया हुआ है. And whenever client gets onboarded, मैं starting of the month जो भी मेरे last month client जो नए onboard हुआ, I courier it to them. And that is something जो मुझे काफी appreciation मिला हुआ है from the people. What is happening कि अगर आप आज online कर दो फोटो भेज रहे हो, सब लोग के पास फोटो emails आते हैं. Now people have started to understand कि जो physical होता है, it is making much more sense. वो काफी उसको comfort भी देता है कि उसको कुछ physical letter मिलता है, कुछ भी मिलता है तो वो मुझे काफी अच्छा response आया.
सेकेंड थिंग फॉर बर्थडेज ऑब्वियसली जो एनजे का जो बर्थडे होता है वो तो मैं भेजता ही हूँ जब भी बर्थडे होती है. आई ऑल्सो कॉल देम इंडिविजुअली एट द सेम टाइम एट द स्टार्ट ऑफ द मंथ. जो अगेन डीएसपी का ही जो बर्थडे एसआईपी है उसका भी मैंने सेम उसको ये उसके ये प्रिंट आउट्स में निकाले हुए हैं, उसके बनाए हुए सेम टू सेम विद माय लोगो. सो अगेन बर्थडेज पे मैं भेजता हूँ. अगेन इट हैज गिवन अमेजिंग एज एन अपॉर्चुनिटीज है उसको क्लाइंट के साथ इंटरेक्ट करने के लिए. क्लाइंट सामने से मुझे वो फोटो खींच के भेजता है कि थैंक यू सो मच फॉर दिस अमेजिंग गिफ्ट और अमेजिंग यू नो ये विश. So these two three things are amazing which is happening. Fourth thing which I do is कि summer vacation के पहले I try to जो बड़े clients है कुछ ना कुछ उसके फैमिली उसके बच्चों के लिए मैं I send across to something or other. So yeah, these are the 4 to 5 activities which I do as far as client engagement are concerned. And what I try to do is I try to send at least an update on insurance investment कुछ भी हो once a week मैं सब लोगों को भेजता हूँ broadcast करता हूँ. All my clients are there on the broadcast list. So Because yeah. children would be from different age groups. Sorry. Because Hello. children will be from different. Because the children Nitya, would be from आपका different age groups. What kind of? so basically so for I'll example put. I obviously you will be aware about your client के उसके क्या kids है, right? So for example छोटा बच्चा होगा say age between 10 to 12 उसको मैं ये crayons भेज देता हूँ या something or other. It's not going to be a huge gift. 100-200 का मैं gift ले लेता हूँ for only A or B category clients and I courier it to them. तो काफी उससे इम्पैक्ट हो. आई एम टेलिंग यू जो अगर आप नॉर्मल सीजन में करोगे उसको वही लगेगा भाई ये दिवाली है इसलिए दिवाली के लिए भेज दिया है. बट इफ यू डू समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स समथिंग ड्यूरिंग द ईयर इट विल मेक मच मोर वैल्यू टू इट. अभी फॉर एग्जांपल मुझे आज फॉर एग्जांपल एनजे हम लोग को दिवाली गिफ्ट देता है, ठीक है. वो हम लोग को जो एज इन लास्ट 2-3 ये टाइम से वो क्या बोलते हैं रिफ्रेश का भेजता है एनजे. बट वी नो भाई वो दिवाली के लिए. बट से एनजे गिव्स अस समथिंग इन बिटवीन तो उसका इम्पैक्ट ही अलग गिर जाता है. Now, for example, if we had gone to that NJ, we had gone to NJ HO, right? NJ ने हम लोग को बड़ा गिफ्ट हैम्पर दिया. वो दिवाली गिफ्ट से बड़ा छोटा होगा पर वो हम लोग को उसकी वैल्यू ज्यादा हो जाती है. So yeah, these are the kind of activities that I do it. Okay, ऋषि, thanks. एक बार वो रिपीट करो ना, बर्थडे के लिए क्या बोला आपने? So बर्थडे के लिए ना DSP के वेबसाइट पे आप जाओगे ना, तो वहां पे बर्थडे के लिए सो अगेन एक और भूल गया. सो उसके अंदर ही अगर न्यूबॉर्न बेबी होता है उसके लिए भी एसआईपी का. हेलो, एम आई ऑडिबल? नहीं ना मैम, आवाज आ रहा है? या वेरी मच ऑडिबल. या सो अगेन आप डीएसपी पे भी आप जाओगे, अगर कोई न्यूबॉर्न होता है ऋषि उसके लिए आपकी आवाज नहीं आ रही है. एकदम क्लियर आ रही है. नैना, इट्स ओनली फॉर यू, हमारे लिए क्लियर है. Okay, so I'm going ahead. So wait, so if you go on the DSP website, there's also an option if there's a newborn baby which has come. तो उसके लिए भी आप क्लिक कर सकते हो. आज के दिन पे अगर आपका न्यूबॉर्न बेबी if he becomes 18 years तो उसको पास हिस्ट्री पे कितना होता है, even if you put 1000 rupees SIP तो आज फॉर एग्जांपल 10 लाख 20 लाख जो भी हो गया. सो इवन उसके भी मैंने ब्रोशर्स प्रिंट करके रखे हुए हैं एंड जब भी कोई न्यूबॉर्न होता है आई शेयर इट विद देम, आई कोरियर इट टू देम. It is making amazing difference. I'm telling you guys, कुछ आप फिजिकल में करोगे उसका भी आज इम्पैक्ट अलग हो गया है क्योंकि लोगों को स्पैमिंग बहुत हो रहा है ऑन द मेल साइड व्हाट्सएप साइड. सो इफ यू सेंड समथिंग, अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट का रिटर्न भी आप भेज दोगे इट मेक सेंस. सेकंड एक लास्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, जब भी मैं रिव्यू के लिए जाता हूँ आई मेक श्योर कि अपना जो फैमिली नीड मास्टर है उसका मैं प्रिंट आउट लेता हूँ. जहां जहाँ पे कलर होगा उसका मैं कलर प्रिंट ले लेता हूँ, बाकी ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट लेता हूँ एंड गिव इट टू हिम. That is making huge impact at least for me. Print out. Family need master ले लो या उसका पोर्टफोलियो ले लो, जो भी आपको करना है. Okay. तो बेसिकली जो आगे का जो फ्रंट पेज रहता है वहां पे आपका लोगो रहेगा, उसको मैं कलर एज इन कलर में प्रिंट करता हूँ. रेस्ट एवरीथिंग आई पुट इट ऑन ब्लैक एंड व्हाइट. बट इफ यू गिव इट इन द फाइल, इवन आई मेड माय ओन फाइल, मेरे लोगों के साथ फाइल डाला हुआ है. सो अगेन वो फाइल कहीं पे रखेगा, किसी को भी आइडिया है कि किसका है, देयर इज नंबर एंड एवरीथिंग रिटन ओवर देयर. So your presence is automatically coming at least in their own house, yeah, into their office. आया नहीं आया I don't know, होगा नहीं होगा, but that's what I think or that's what I foresee.
Good Yeah, activity. that's all that's all from my side. Who is next? Hi, Kaushal? Kaushal here. Kaushal. बोलिए. So, activity as such, any client engagement. So for first meeting से ही client के पास पूरे डिटेल में explanation होती है पूरी, and I tell them to save my number. So WhatsApp status is a primary thing where I update. I tell my client कि being more than 1,000 people in my WhatsApp broadcast list, sometimes it gets hang, तो मैं वो stop कर दिया है. तो आपको मेरा नंबर सेव करना है, आप 24 आवर्स में मेरे स्टेटस मैसेज देख सकते हो. यू विल गेट टू लर्न डिफरेंट थिंग्स, नॉट ओनली अबाउट फाइनेंस बट डिफरेंट सॉर्ट ऑफ थिंग्स. सो मेनी क्लाइंट्स आर डूइंग दैट. सो वहां से वो लोग को कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है. एंड देन इफ दे हैव एनी क्वेरी दे पिंग मी पर्सनल इन व्हाट्सएप एंड देन आई एक्सप्लेन इन डिटेल. सो दैट वे आई एम मोस्ट ऑफ द टाइम एंगेजिंग विद देम कि क्या चल रहा है मार्केट में, या क्या न्यूज है, या कुछ बड़ा ब्रेकिंग आ गया, कुछ भी आ गया. तो ब्रॉडकास्ट में बहुत कम भेजता हूँ. जैसा अभी 2000 का नोट का आया था वही भेजा था, बाकी बहुत कम कर दिया है. एंड आई टेल देम टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, जहाँ पे आपको सब अपडेट्स मिलेगा. बर्थडे का जब वो आ जाता है रिमाइंडर, तो पर्सनली मैं पिंग करता हूँ सबको विश करने के लिए. एंड आई रिमाइंड देम कि हम लोग ने अभी तक एसआईपी इंक्रीज नहीं किया, तो दिस इज अ गुड डे. अगर आपको चलता है तो आज कर लो तो अच्छा है. सो समटाइम्स इट कन्वर्ट्स इनटू पॉजिटिव वे. तो क्लाइंट वो दिन एसआईपी चालू भी कर देता है, या एनिवर्सरी होता है तभी करता है. एंड दूसरी जब कुछ भी क्वेश्चंस रहते हैं, क्वेरी रहते हैं, तो आई टेल क्लाइंट की आई विल हेल्प यू आउट फ्री ऑफ कॉस्ट. सो वो हिसाब से भी क्लाइंट के साथ एक रिलेशनशिप बॉन्डिंग अच्छा रहता है. तो दूसरा जो भी काम रहता है, तो अपना टैक्सेशन का पार्ट हो गया, टीडीएस कटा है या क्या हुआ है, कुछ भी इनकम टैक्स रिलेटेड नॉलेज चाहिए, तो वो सब चीजें मैं फ्री में, आई मीन आई गाइड देम. सो दैट वे दे हैव अ ट्रस्ट विथ मी. सो वो एक चलता है, एंड बेस्ड ऑन दैट रेफरेंसेस आते रहते हैं. बट आप अगर मेरा स्टेटस देखोगे तो रेगुलरली आई एम अपडेटिंग. एवरीडे एक वीडियो रहता है, फाइनेंस का कुछ दूसरा रहता है, इनकम टैक्स का रहता है. तो वो हिसाब से क्लाइंट्स आर अपडेटेड, और सर्टेन क्लाइंट्स फिर पिंग करते ही रहते हैं, हो जाते ही मैसेज मेरे को. तो वैसे वो टच में रहते हैं सब. तो गाइस आई विल जस्ट शो यू. इसके अंदर मेरा वीडियो ऑन रखा है. आई विल शो यू कि मैंने क्या वो जो फिजिकल जो बनाया है, इट विल आई विल जस्ट शो इट टू यू गाइस. फाइल आप कौन से मटेरियल का बनाते हैं? आई विल शो यू, आपको आइडिया आ जाएगा. सो मेरा वीडियो सिर्फ आप ऑन रखिएगा, यू विल कम टू नो. सो ये मेरा बर्थडे कार्ड है. Just a second, Rishit. Can you just pin him so that he comes center? Yeah. Shall I proceed? You get this printed. Yeah, I've got this printed. So if you see मेरा ये front page है, then यहाँ पे कुछ नहीं है. Again यहाँ पे पूरा DR सब कुछ है. We have monthly SIP of 1,000 rupees. 1980 से अगर आपने start किया होता, so what is the corpus? So trust me, अगर मैं ये 1,000 rupees भी डालता हूँ, it goes to 50, 55, 60 lakhs में चला जाता है. To that fact 1 crore भी जाता है. तो बहुत बड़ा difference आता है यहाँ पे. I courier every day, in every month, starting of the month मैं courier कर देता हूँ, जिसका भी birthdays होता है. And then पीछे मेरा logo है with a scan. So this is my birthday card. Then this is my newborn baby card. ये आपने डीएसपी से लिया हुआ है? DSP में सिर्फ कॉपी पेस्ट किया है. And ये वही ये फर्स्ट पेज में the great ones too. And this is what I've written कि dear जो भी है monthly SIP अगर 18 years पहले start किया होता है Sensex में, what would have been the corpus? This is something which is benefiting me a lot. कोई भी नया बंदा होता है उसके ये छोटा as in newborn होता है, तो obviously there is a attachment which is there. यहाँ पे तो SIP मुझे सामने से आ जाते हैं. Then this is my logo and my details. Then this is my card which I whenever client gets onboarded, this is my card. यहाँ पे थोड़ा सा मैंने changes किए हुए हैं. तो यहाँ पे मैं clearly लिखा हुआ wealth creation is the result of two things: sound financial advice and you. Then I've written a pledge. So यहाँ पे मेरा एक pledge है that you need to be insured, far-sighted, patient, invest consistently, well informed.
तो यहाँ पे अगर मुझे बोलता है ऑलवेज शेयर देम कि मैंने आपको ये भेजा हुआ है, आपको इंश्योरेंस लेना ही है इररिस्पेक्टिव। फिर यहाँ पे अगेन इट्स अ स्मॉल समरी दैट आई प्रॉमिस यू, बट आपको भी वही प्रॉमिस करना है एवरीथिंग। And this is my logo. Now if you see यहाँ पे एक छोटा सा ये है whereby you know I attach this, ये basically bookmark है। तो मैं यहाँ पे इसको ये कर देता हूँ as in what we can say punch करता हूँ and put a ribbon, ये ribbon लगा देता हूँ। तो in case if it's a book avid reader तो अपना ये अपना use भी कर सकता है। तो कहीं ना कहीं पे मेरा लोगो है, मेरा ब्रांडिंग हो जाता है। तो I attach it over here, मेरा यहाँ पे अटैचमेंट आता है ये। Okay, very insert it here. एक मिनट, just a second, sorry. Yeah, this is how it looks. This very one. nice. So if you send, I think मुझे इससे बहुत as I said it huge difference for me. And if you send something on the physical side, it is making much more sense right now. Even if I get a letter, मुझे एक letter बहुत अच्छा लगता है compared to मुझे कोई email करेगा, because email पे मुझे बहुत spamming आता है। I think if you guys do it, it's just a one-time activity. मैं मेरे जो onboard करता हूँ client से 10-15 onboard करता हूँ, it takes what around half an hour 45 minutes time to सब उसका नाम लिखो। I even made my this envelopes कि मुझे कुछ करना ही नहीं होता है, so उसके मुझे सिर्फ डाल के I just have to courier. Even I made courier को मैं बता दिया कि these are my fixed charges, I'll send you on from first to fifth, मैं आपको सब couriers भेज दूंगा। तो मैं उसके साथ भी टाइप कर दिया। Now what I'm paying, if you ask me for Mumbai, if I send any courier activity for Mumbai, I'm just paying 20 rupees. That's it. If I send across Mumbai, like Thane, Navi Mumbai, तो मेरा 25 rupees है। गुजरात, महाराष्ट्र मेरा 35 है ना। Across pan India 50 rupees है। कौन सा कुरियर वाला है? 50 rupees for a client is nothing. कौन सा कुरियर वाला ऋषि? ये अपना मैं भेजता हूँ, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। विचारे। So मेरा जो कुरियर जाता है, when I send the courier, मेरा around 30-40 couriers जाते हैं एक साथ। आप onboarding कर रहे हो, जिसका बर्थडे है, सब लोग को आप भेजोगे 30-40 तो मेरे हो ही जाते easily. But that 50 rupees, 60 rupees a client makes huge difference. Whether it's a small client, big client, 1000 rupee client or 500 rupee client, मैं सबको भेजता हूँ। कौन सा client कब बड़ा बन जाएगा पता नहीं है, और कौन सा client मुझे बड़ा reference है, I don't know. Rishit, you have a PDF or a PowerPoint or something, some format of the soft copy format of these? I don't know soft copy. What I can do, I can share. I can click a photo and share it on the group. हाँ, please, because इसमें एकदम clear नहीं था. So I'll share it on the group. I'll share it on the group. Thank you. फाइल दिखाइए ना ऋषि। कौन सा फाइल? एक मिनट, फाइल भी दिखा देता हूँ। Yeah, I'll show you my file. ठीक है, एक मिनट। Just a second. ओके, फोल्डर में भेजते। Sorry. My mute page. I'm so sorry. So this is my folder. Now this folder is costing me 10 rupees. Okay, मोटा मोटी. And इसका प्रिंटिंग का 1-2 रुपए का प्रिंटिंग होगा. So if you see मेरा यहाँ पे लोगो आ जाता है, मेरा नाम आ जाता है. Now this kind of folder if you give ना, वो अपना रखेगा ही रखेगा. This paper folder. And usually I share with, जब भी मैं नया क्लाइंट को मिलता हूँ, मैं अपना ये इंट्रोडक्शन इसके अंदर मैं शेयर कर देता हूँ. So this will be with him throughout his tenure, throughout जब तक मेरे साथ है. At least folder तो रखेगा ही रखेगा. Again, whenever I meet a client, मैं उसको ये folder दे देता हूँ. 10 रुपया है, ठीक है यार, कोई client onboard हुआ नहीं हुआ, ठीक है, he'll like this thing. It's not about onboarding. I've given something, it's a memory which I've given it to him back. And this is something which will be useful to him. ये फेंकेगा नहीं कहीं पे डस्टबिन में, ये folder. So the point is that I'm just creating my presence in their mind into their own family. I don't know इसका result आएगा नहीं आएगा, that's a secondary thing, but it is making a good, you know, थोड़ा सा हटके मुझे जा रहा है.
Now, if I tell you there is one of my client who जिसका आधा आधा एक दूसरे advisor के पास ही NG and there's half the portfolio is with me. So he said the same thing है तू ये सब जो मुझे भेजते हैं these are the small things जो customize करके भेजते हैं it is making huge difference. I'm really liking it. वो मेरा दूसरा बंदा करता नहीं मुझे सिर्फ दिवाली पे एक गिफ्ट भेज देता है पर ठीक है पर मुझे बीच में जो छोटी मोटी चीजें करता है it is making much more I'm much more happy with you comparatively. Can you share the letter what you have written on the group? Sorry, I got आपने जो लेटर लिखा है वो मिस कवरिंग लेटर वो शेयर so करेंगे? covering letter I'll say थोड़ा सा against में जाता है but again as in nobody is as in savvy भी उतना अच्छा नहीं है तो मैं तो यहाँ पे clearly लिख लेता हूँ. So I'll share you what is a covering letter. So yeah, these are my services, these are my products. Sorry, my products and my services. If you see, ये मेरे products है which I do, and it's about me कि what we are into, what we do, and यहाँ पे मेरा scan रहता है. So technically मेरे letterheads भी print out किए हुए हैं. So मेरे around ये this kind of things always मेरे पास around 150 होंगे ही होंगे at any point of time. जब भी कोई नए client के पास जाता हूँ I share this with them. और मेरा IP होता है कंपनी में IP करता हूँ I share this with them. I share this brochures and everything. I understand इसके अंदर it is a bit against the law but I feel it's okay. As in I'm too small कि वो लोग इतना भी देखेंगे. ऋषित क्यों है अगेंस्ट लॉ क्यों है ये? So I've written his financial planning and all. अच्छा अच्छा वैसे बोल रहे हो. हाँ उसके against law है. अच्छा okay नहीं it's a very beautiful way to connect with customer. Very nice way. So this again IIP करोगे तो do share this. आप अपना folder और ये दो. Usually IIP में around 30-40 या 60 लोग रहेंगे. What you are spending is around 700 rupees. That's it for an IIP in a company. But it's a long-lasting effect. Nice. Yeah, that's all from my side. So I'll share you the photos and everything. Great, Rishit. Thank you. Who's next? Hello. Yeah, Vaidi. Yeah, I can go next. As such, there is no structured manner of client engagement in my case. I do extensively use the Bismol products of NJ, the physical ones, and of course the digital ones also. And I do take up my phone and call a lot of people very frequently. So I do believe that helps in connecting with them. The Saturday school is something which I have been wanting to do seriously, but somehow वो जैसा सोचते हैं अभी post pandemic या post lockdown, there are too many online programs happening. So somehow I get the impression people are not taking these programs too seriously. बोलता तो हूँ, I do make sure that it's not just an invite. I follow it up with some sort of a covering letter and a personalized message also. And where I feel that people, certain section of clients would benefit from it, I also give them a call and tell them this is one program which you should not be missing. As far as physical things are concerned, I do like the concept of Rishit, what he's doing with physical cards and welcome letters and stuff like that, which I've also been doing, but it's not too consistent. The only consistent thing which I've been doing for the past 15-20 years is sending a physical Diwali card to my clients and or prospects both. So the Diwali card thing is something very consistent which has been happening. Other than that, the client onboarding letter, the birthday, anniversary card, stuff like that, they are pretty good ideas. And starting this month or next month, I'll definitely implement that also. And I have in the digital world, rather, I have subscribed to multiple creatives which I keep using depending on whether how useful it is. For me, social media has been a very nice way of connecting with my clients also. There were quite a few people who are known to me or in my immediate circles
जिन्होंने सिर्फ सोशल मीडिया के पोस्ट दे करके उनको पता चला कि हम लोग ये सब काम कर रहे हैं करके बोल करके, सो क्वाइट अ फ्यू हैव गॉट कन्वर्टेड इनटू क्लाइंट्स. बट more than that, what I feel better about is that before anyone takes a financial decision, even if it is not through us for any financial products and clarifying their doubts, they do tend to touch base with us because of the continuous brand building exercises which we do online. उसमें भी थोड़ा बहुत अब consistency लाना बाकी है, but I do believe I'm doing a little bit of that also. Other than this, nothing concerted client engagement exercises और कोई चल नहीं रहा है मेरा. Categorization is something which I have to learn from many of you guys who are doing it. My client categorization has not really happened as such, the platinum, gold, silver, bronze thing. Thank you. Good one. आज सादिक ने भी क्लाइंट कैटेगराइजेशन पे डाला है. Yeah. We'll do next. Priyanka. I'll go next. Yes. So even we don't have any formal structure for client engagement as such, but we have been doing few things consistently and regularly. So Diwali gifting तो करते ही है. So we try to send something offbeat kind of a thing for Diwali as gift, because sweets, chocolates and dry fruits बहुत common हो गया. People are जनरली मतलब ऐसे एक दो बार ये हुआ कि ड्राई फ्रूट्स है या स्वीट्स है तो मत भेजो, ऐसे ही लिटरली क्लाइंट से रिप्लाई आया था. तो लास्ट ईयर वी सेंट ग्रैनोला, तो हेल्दी ग्रैनोला ऐसे भेजा था, उसका बॉटल्स था एंड कैंडल, वैसे वो गिफ्ट हैम्पर टाइप बनाया था. तो दैट वाज वेरी मच अप्रिशिएटेड बाय क्लाइंट्स. to send something alag ऐसे हटके gift for Diwali now. We have started doing it since last year. And New Year पे calendars जाते हैं. But calendars go to personalized calendar जो NJ ने start किया है. So that we send every year. But that goes to all the clients who are above 25 lakhs of AUM. फिर 50,000 and above SIPs जिनका है तो उनको ही जाता है सिर्फ calendar. Client meets, we have decided कि client meet जो है या investor awareness sessions that we will be doing every year. So last year we had done, this year we have not done or we have not planned anything for this year yet, but that is on the agenda कि वो करना है, साल में at least 2 client meets करने हैं, वो target रखा है. And they help a lot, मतलब बहुत से inactive clients है ना, तो उनको active करने में it helps. Then clients also give references to उनको बुला सकते हैं these client meets. So we have had good experience in the past client meets करने के बाद. Birthday wishes करते हैं. So birthday wishes में भी generally I call the client, मतलब if they are from the A or B category तो I call them and personally wish them. Then अभी कैसे टीम भी बहुत टच में रहती है क्लाइंट्स के साथ, तो वी हैव आवर ऑफिस का व्हाट्सएप ग्रुप. तो माय एडमिन पर्सन सेंड्स, आज जिनका भी बर्थडे है तो उनका पूरा लिस्ट नाम का वो ग्रुप पे भेज देते हैं. सो whosoever is in touch with that client, that team member also wishes the client, मतलब maybe they send a WhatsApp message, बट वहां से भी जाता है. तो इवन टीम का थोड़ा बॉन्डिंग क्लाइंट के साथ होने के लिए दैट हेल्प्स. देन ब्रॉडकास्ट मैसेजेस तो होते ही है, क्लाइंट्स को भेजते ही है. तो व्हेन वी ऑनबोर्ड अ क्लाइंट, दैट टाइम ओनली आई चेक विद द क्लाइंट कि वी रेगुलरली सेंड ऐसे अपडेट्स या कुछ इन्फॉर्मेटिव मैसेजेस. सो इज इट ओके इफ आई ऐड यू टू माय ब्रॉडकास्ट लिस्ट? तो वो क्लाइंट से कंसेंट लेके ही देन आई ऐड देम टू माय ब्रॉडकास्ट लिस्ट. Digital Saturday schools, consistently we have been sending messages to clients. तो वो consistently होता ही है कि Saturday या Sunday जो भी NJ का जब भी वो digital school रहता है तो वो message जाता है. So we have that pattern कि generally I think Thursday तक वो आ ही जाता है mail and message. तो उसका हम लोग अपने कलर्स एंड फॉन्ट में वो इमेज बना के लेते हैं एंड देन वी अपडेट इट ऑन सब सोशल मीडिया पे. तो अपडेट करते ही है, बट वो ब्रॉडकास्ट भी होता है. तो जनरली दैट गेट्स ब्रॉडकास्टेड बाय थर्सडे.
एंड सैटरडे को फिर से एक रिमाइंडर जाता है. अगर सैटरडे को रहेगा तो सैटरडे, या फिर संडे को रहेगा तो संडे मॉर्निंग रिमाइंडर जाता है. एंड देन संडे इवनिंग अगेन एक मैसेज जाता है विद द रिकॉर्डिंग. If you missed it, so you can catch the recording, go through the recording of it करके. And we also have listed all the recordings of this digital Saturday school on our website. तो बहुत बार client के साथ जब भी communication होता है ना, let's say if I am discussing about retirement, and जब भी ये करते हैं, बात करते हैं, तो we tell them कि अरे we have many sessions which have happened, so उसके recordings है, तो you can go and check them out detail में, मतलब retirement related. तो वैसे करके then we also मतलब indirectly वो client को जाके अपना website भी he can see. तो वैसे indirectly we encourage clients to go and check out our websites as well. Retirement का है अभी, संपूर्ण सुरक्षा का हुआ, तो ये जो टॉपिक्स रहते हैं उससे रिलेटेड जब भी डिस्कशन होता है विद क्लाइंट, तो वी जस्ट टेल देम कि अरे इसका डिटेल में देयर हैज बीन अ सेशन, तो तभी वो बात भी करते हैं कि अरे सैटरडेज को हमारा जनरली वेबिनार होता है, डू यू अटेंड देम. हम भेजते हैं एवरी वीक मैसेज. तो जनरली तो क्लाइंट ने इग्नोर किया हुआ रहता है, बट जब ये कॉन्वर्सेशन होता है देन दे रियलाइज कि हाँ ये मैसेजेस तो आते हैं, ठीक है, आई विल गो एंड चेक आउट द वेबसाइट या रिकॉर्डिंग, आई विल गो थ्रू इट. तो वहां से हमको बहुत अच्छे फीडबैक्स मिले हैं कि जब ये कॉन्वर्सेशन होता है ना, जनरली हम लोग भेज देते हैं कि हाँ वेबिनार है, एंड लोग अटेंड करते हैं नहीं करते हैं, बट वी हैव दैट गुड ऑप्शन ऑफ हैविंग द रिकॉर्डिंग ना, तो वो रिकॉर्डिंग यू कैन अपलोड इट ऑन योर वेबसाइट या यूट्यूब चैनल पे, एंड उससे क्लाइंट कैन गो बैक टू इट एंड दे कैन चेक इट आउट. तो एवरीथिंग वी डोंट हैव टू एक्सप्लेन देम इन डिटेल, या इवन इफ वी एक्सप्लेन इन डिटेल ना, वो लोग भूल जाते हैं बाद में, या इफ दे आर डिस्कसिंग विद समवन दे कैन गिव दैट रेफरेंस, अरे इनके वेबसाइट पे ना वो इस रिटायरमेंट रिलेटेड सेशन था, तो यू कैन चेक इट आउट, या फिर दे कैन सेंड द लिंक ऑल्सो टू देम. तो वैसे भी रेफरेंसेस काफी आए हैं कि एक दो रेफरेंसेस वैसे आए कि अरे दिस पर्सन सेंट मी द लिंक आपका जो वेबिनार होता है उसका, एंड देन वी गॉट टू नो अबाउट इट, एंड वी वुड लाइक टू डिस्कस इट फर्दर. ऐसे in monthly newsletter. प्रियंका जी, you segregate the sessions on your website like retirement का ये है, so you're segregating, or it's just like a pool? Yeah, it's a pool. So we just upload it every week. अभी जो सैटरडे का हुआ था तो संडे इवनिंग तक जनरली वो अपलोड हो जाता है वेबसाइट. Okay, okay. Then NJ का monthly newsletter also. On NJ immediately. What? You get it on NJ website immediately. नहीं, we upload it on our website, Purple Finch. You get it immediately from portal. Recording हाँ आ जाता है. RM जनरली वो ब्रॉडकास्ट करता ही है, तो वो रिकॉर्डिंग आ जाता है. सो अगर संडे तक नहीं आया ना, तो मंडे को माय टीम गेट्स बिहाइंड द RM एंड वो ले लेते हैं रिकॉर्डिंग का लिंक. वो सिस्टम्स वी हैव मेड कि वो अपलोड हो ही जाना चाहिए संडे तक. नहीं हुआ तो मंडे को देन द पर्सन विल कम एंड दे विल गेट बिहाइंड. एक्सपीरियंस कितने लोग देखते हैं, कितने लोगों को वो यूजफुल. जो हम लोग ब्रॉडकास्ट करते हैं ना लाइव सेशंस, हार्डली कोई देखता है, बट द रिकॉर्डिंग्स मेनी पीपल हैव बीन सीइंग, बिकॉज जनरली तो उनको पता ही नहीं रहता. अच्छा रिकॉर्डिंग है क्या, ओके आपके वेबसाइट पे है क्या, हाँ हम देखते हैं. ऐसे करके बहुत जन ने देखा है एंड दे हैव अप्रिशिएटेड इट आल्सो. अरे हाँ आई हैव सीन, आई वेंट एंड आई सॉ इट करके. या फिर बहुत से बार क्या होता है कि इफ यू आर डिस्कसिंग समथिंग ना, तो वो पर्टिकुलर सेशन का लिंक डायरेक्टली यू कैन सेंड देम कि हाँ ये देख लो आप. Any more questions? And the last thing that we are doing currently for client engagement is वो भी अच्छे मतलब we discuss जो भी review meetings and all होते हैं वहाँ पे old versus new tax regime का discussion we do. So that is something that clients are really appreciating currently. बहुत से clients के office through वगैरह हो जाता है कि old versus new का उनको comparison मिलता है, but there are many clients who are not even aware कि कुछ new tax regime आया है and वो check करना चाहिए या वैसे. So there we have been able to make a lot of difference.
कि उनको जब भी दिखाते हैं कि ओल्ड टैक्स रिजीम में आपका इतना टैक्स आ रहा है, न्यू टैक्स रिजीम में इतना टैक्स आएगा, सो यू कैन गो फॉर न्यू टैक्स रिजीम, वहां पे कम आ रहा है, तो दैट दे अप्रिशिएट। और इसी बहाने ना देयर आर मेनी क्लाइंट्स जो जनरली इनकम डिस्क्लोज नहीं करते, तो इनकम भी पता चल जाता है कितना इनकम है एंड ऑल। सो दैट इज समथिंग वी हैव बीन फोकसिंग ऑन करंटली and it is getting appreciated as well. So new tax regime versus old tax regime is something I would encourage everyone to do. So even the client comes to know कि अरे हाँ there is something that they are making a difference यहाँ. Yes Ajay ji. So प्रियंका, इसमें न्यू वर्सेस ओल्ड टैक्स रेजिम कैलकुलेशन के लिए आप कौन सा टूल या कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं? So we have made our own calculator. न्यू और ओल्ड का तो था ही, न्यू का मतलब जो नेटवर्क एफपी का कैलकुलेटर है ना, ओल्ड वर्सेस न्यू, तो उसको ही हम लोगों ने एडिशनल और एक न्यू टैक्स रिजिम का कैलकुलेटर बनाया है. So we had sent it to network FP also. I don't know whether they have shared it or What changes you have made in that? नया टैक्स रिजिम का कैलकुलेटर बनाया है डायरेक्टली, बिकॉज उसमें तो कुछ है नहीं ना ज्यादा, जस्ट वो टैक्स लैब्स डालने हैं, वहां पे डिडक्शंस तो कुछ नहीं है. कैलकुलेटर वी हैव मेड एंड देयर आर मेनी, आई थिंक इसके आईटी के वेबसाइट पे आल्सो देयर इज दिस कैलकुलेटर, सो यू कैन गो एंड कंपेयर. आपका वाला शेयर कर दीजिए ग्रुप में इफ पॉसिबल. मैं करती हूँ. थैंक यू सो मच. So that's it from my side. Okay, अजय जी आप बताएंगे. श्योर. देखिए, मैं तो इस ग्रुप में सबसे नया बच्चा हूँ एक्चुअली. तो जस्ट 5 years, so I've been busy acquiring clients and understanding the industry and things around. So as such, when it comes to client engagement, there are a couple of things I'm doing. First is every month we share the valuation report with every client. So that goes to them via email, and if they have any queries, they contact us actually. Secondly, when client achieves certain milestone, for example, some client has joined and his AUM has grown to say 10 lakhs, for example, first time, then I would congratulate the client actually that okay, you achieved such things, and we are looking for the next milestone of 25 lakhs, for example. Keep it up. So that is other thing I do. And Digital Saturday, I was doing it, but not consistently. But I'm very much inspired from Priyanka, the way they have been doing it diligently, recording it, and in fact uploading it in the website. I tend to basically copy their model actually going forward. So these are a couple of things. I mean, Bismal also I order a lot of things, many booklets and all. And when I have personal meeting with the client, I share the booklet. So that also goes every time. Yeah, these are the few things, Naina, for now. JG, what do you do when the client is achieving the milestones that you mentioned? Like you are just sharing messages or any other specific thing? No, just a WhatsApp message. I would put in the group as well, shortlisting them and sort of I would put in the group right now. Guys, एक small query है. So I have taken my website from NJ, जो NJ website देता है वो. तो उसके there is an option of this uploading videos and all. ये जो प्रियंका जो बात कर रही है. So Priyanka, are you with NJ का website or you have made your own website? No, we have made our own website because NJ we had NJ through ही website पहले, but वहाँ पे it was very difficult बहुत सी चीजें customize करना because they have their set template, तो fonts और वो सब customize नहीं होता है. तो फाइनली देन हम लोगों ने बाहर से बना के लिया वो. एंड इवन जो अजय जी सेड ना, सेम थिंग आई मिस्ड इन माय डिस्कशन कि इवन वी सेंड this thing wishes to our clients. मतलब once the client crosses 1 crore AUM ना, तो we send we generally call them and congratulate them, and we send a cake to their house with the wordings ki congratulations for becoming a karodpati. So that we have been doing.
Yeah, Ajay ji, please continue. Yeah. No, in fact, I just did it actually. मेरे पास ज़्यादा item नहीं थे. I'm learning from all of you. Okay, अभी ममता. मैं पहले भेजती थी दिवाली गिफ्ट्स वगैरह, तो मुझे यही ऐसे ही फीडबैक आया that sorry, that the gifts, you know, like they get replicated or whatever. So what I started doing is what they just talked about, saying that when the client crosses a milestone, whatever the milestone may be, for somebody it may be, you know, 1 lakh is something great for a starter who started with a 500 SIP, or for even for the lower sections, especially the maids and the drivers that I have, you know, of my clients. तो उनको वो एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है, तो उनके लिए ये स्पेशल है क्योंकि उनको कोई गिफ्ट नहीं देता है. So they really appreciated that. For the other clients also, when they cross this milestone like 10 lakhs, 25 lakhs ऐसे slabs में, तो उनको मैं मिल के उनसे बात करके I take them out for a lunch. The lunch is on me. And if it doesn't happen, you know, immediately, it may be, you know, delayed. But then if it's delayed, then the family also joins in. Because it's not just one person who has contributed, right? तो मेरे बहुत सारे husband and wife होते हैं, ऐसे होते हैं. To get them together and have a celebration. And I used to send the newsletters that I subscribe to from NJ, but clients would not read it fully. तो मैंने क्या किया, थोड़ा एक snip करके उसको भेजना शुरू किया कि देखे, it's a small thing which they can, you know, consume within 2-3 minutes, one small article, अगला article बाद में next time आता है. तो ये चीजें हैं, ये कर रही हूँ. And client engagement as per the investment side, I'm very, very alert to when a client says something like, मेरा SIP stop कर दो, housing loan है, ये है, वो है. I get on immediately on a call with them and talk to them about how to finish it off faster. तो मेरे NJ के RM से भी argument हुआ था इस बारे में, because they say, you know, that concept of start a SIP for the entire term of the 30 years or whatever, and you will recover your money. And this debate is ongoing, and I'd like this to be, you know, discussed in another session. Is it better to finish the housing loan by repaying faster and getting onto investments fully, which they say no, ज़्यादा term लो और उसका SIP लगाओ, ये वो पूरा 30 years चलाओ, because he's committed to that. But I actively close my clients' housing loans and get the money onto the SIP side. तो ये मैंने LAS भी दिए हुए हैं कुछ clients को, उनका भी मैं ऐसे ही कर रही हूँ. I take the Bajaj one because you can foreclose it faster. So I'd like the group's you know, ideas on that. फिर बाकी अभी मैंने दिवाली वगैरह का स्टॉप कर दिया, न्यू ईयर का स्टॉप कर दिया है. But occasionally I just go meet the client, even if there is no, I mean, the investments are going on, just go and meet. And that time take something for them, which is like, you know, that is appreciated more than at festival times. Because I've also been at the receiving end. हर कोई आता है, श्रीराम से आ गया, HDFC आ गया, ये NJ का आ गया, but it all comes at the same time. So even I appreciate something which comes to me unexpectedly. तो वही मैं clients को भी ऐसे ही कर रही हूँ. Other than that, no, not much on my side. Sachin. Hello. Yes. Yeah, hi. From a client engagement, I think we do, I mean, we don't have any specific things that we do, but we have kept our branding in place where, you know, so we have just a file है, तो हमारा भी एक file है ऐसा. Can you see it? I don't know. Yes, leather file. Yeah, kind of a leather file with the name embossed on it. And so whenever a client gets onboarded, तो उनको ये file जाता है
basically. The file has all the compartments for insurance, for their FDs, for their DMAT का कुछ अगर कोई papers है, and then we make it sure that the file is handed over to them personally. तो जब भी हम लोग personally जाके देते हैं, then that we get that opportunity to meet their families or other acquaintances if any, and that is appreciated. इनको अच्छा लगता है ये. Second, what we have done is any communication that we do to clients is हमने ऐसा एक envelope बनाया. This is a branded envelope ऐसा. So there are two sizes. One A4 वाला है और एक normal size है. So we make sure that any communication that goes to the customer is via this envelope. Gifting हम लोग Diwali gifting we always try to do something different, as all of them said, no sweets, no dry fruits. So we kind of send them some scented soaps and some perfumes or hard तो वो बहुत appreciate हुआ था. And people still after मतलब वो हम लोगों ने 2 बार भेजा and then we changed it, so people still come back and say नहीं तुम्हारा वो वाला बहुत अच्छा है. So that means people keep in mind, people recollect things which they like. So now we will be doing that again. So वो एक है. Engagement के हिसाब से भी broadcasting तो है ही, but as on birthdays I personally call them so that you get to have a conversation with them. Team also calls them because team बहुत touch में होती है, तो I ensure that the team also calls, that वो personal bonding भी अच्छा होता है उससे. From a broadcast क्या once the client is onboarded, तो अगर वो उसकी wife भी है, दोनों clients है या they are comfortable having, तो we form a group basically. तो हर एक client का एक group है, and all the communication that happens in that group, and in case if they want anything, any quick updates, तो वहाँ से help होता है. तो me and my team and they, तो पूरा वो group होता है. तो उससे क्या हो रहा है कि we are also trying to have a list basically कि क्या क्या बात हुआ है उनसे, and the same thing is kind of replicated, or I would say taken on mail also. तो हर एक approvals का या हर एक चीज का एक mail भी होता है उसका, so that we have a what do you call, a proof of something, because कल अगर WhatsApp उड़ गया हमारा, something goes wrong, then there are chances of these all conversation getting lost. So everything is documented on mail, and that we do it. What I think what I have took, couple of points that I like is the celebration. Actually वो हम लोग नहीं कर रहे, तो वो मैं start करने वाला हूँ. I like वो idea बहुत अच्छा है. Even small 10 lakh, 15 lakh, 20 lakh, जो भी है, for them it's a big amount. कोई बंदा small से कर रहा है start, और अगर उसका 5 लाख भी होता है, तो it's a big amount for them personally, and that should be celebrated. वो एक अच्छा है. और I think marketing, I'm not much into digitally, मेरा काफी पहले से है. I'm more less on paper, but what I feel is paper का recollection is much more than the digital sometimes, because the paper would lie in their house. हम लोग कोई भी flyer या कोई भी अच्छा uniquely made अगर हम लोग send करते हैं, like the birthday card what he said, it's a very beautifully made card, पर वो card कोई फेंकेगा नहीं, so they will keep it in their house, and that is a good way to I think to do it. Otherwise I think we don't give calendars all, वो भी तक हम लोग कभी नहीं दिए थे. हम लोग actually बारिश में used to always give an umbrella. That was a thing that we used to do, and with our logo printed on it. तो वो एक हम लोग का 2-3 साल से हम लोग कर रहे थे वो. ये साल we have not done it, but otherwise I think yeah, that's it. I mean, from my side. Yogesh? I think I am only the remaining.
partner. In communication, there is two ways. One is one-to-one communication and one-to-many. So in one-to-one communication, I have created two templates. Like Rishit shared the letter, engagement letter or introduction letter. So whenever I get any reference, generally I send that, I add that address or phone number into my phone list, and then I send an introductory message. So that is a standard message with what I am and what services and what products we offer. It is on the line of the introduction letter which was created by Network FP. So वो रहता है. Then engagement पे one-to-one engagement में again that DSP का birthday wish generally for younger clients or maybe even up to 40 stuff में जो है उनके लिए I do send birthday का calendar ये birthday greeting, but again all in digital format. I'm not doing anything in the physical format, all in digital. So DSP का जो birthday card है greeting, so that shows कि अगर आपने आपके first day पे आपने या मे बी आपकी फैमिली ने चालू किया रहता है SIP of 1,000 rupees, then what it would have become today. And generally, if the person is into 30s or 40s, that amount goes into crores. So again, that is a very good way of connecting. For few clients, I do call them also on the birthdays. With client engagement, mein, other than that, one-to-many, there is a broadcast list which I earlier I used to share the newspaper articles also, लेकिन और maybe NJ के जो MCS videos और images आते हैं, लेकिन thereafter I got some feedbacks के बहुत हो जाते हैं messages and people start ignoring. So अभी मैंने वो बहुत कम कर दिया है. Generally I update the images or videos on the status. And अगर कुछ specific experience है या like अभी nowadays after having been in business of insurance for 4-5 years ना, अभी insurance के claims आने लगे. So based on that I do share the actual experiences कि कैसे किसी का क्या हुआ था, किसी ने समझो नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लिया है तो ब्लैकलिस्टेड हॉस्पिटल की वजह से क्लेम रिजेक्ट हुआ है, सो व्हाट केयर ही शुड टेक. सो दैट लाइव एग्जांपल. या किसी ने अभी रिसेंटली मैंने देखा था किसी ने टॉप अप ही लिया था, बेस प्लान नहीं लिया था, एंड देन ही हैड टू सफर बिकॉज ही हैड अ बाईपास सर्जरी. सो वो एक्सपीरियंस के बेस पे मैसेजेस जो है वो मैं ब्रॉडकास्ट भेजता हूँ. अदर देन दैट स्टैंडर्ड इमेजेस वगैरह अभी मैंने बंद कर दिया है. हार्डली मे बी मैं वंस अ वीक और समथिंग मैसेजेस भेजता हूँ. दिवाली के लिए यस अगेन मे बी टॉप 10% ऑफ क्लाइंट्स के लिए दिवाली गिफ्ट्स बेचता हूँ, लेकिन अगेन दैट इज फ्रॉम एनजे के जो ये साल के भी आए थे रिफ्रेश के जो प्रोडक्ट्स थे वो बहुत अच्छे थे एंड दोज वेर वेल एप्रिशिएटेड बाय क्लाइंट्स. सो दैट आई एम डूइंग. Other than that, I think nothing. Yeah, that's all. Please, sir. Sandeep sir. Yeah, should I go next? Yes. आप बोलिए. Yeah. So we have we try to do a very structured kind of a client engagement process. So it starts right from the prospect letter, and then to a welcome. Once the client gets onboarded, a welcome letter goes to the client. We also have a welcome kit for the client. In that, essentially in the welcome kit, what we do is we give all the brochures, and we give this. We've got this printed FIDOC document. We have a calendar, and there's a diary that that we give. So that is how, and there's a financial planner. So we give a complete welcome kit. So then there's a birthday card that we send out, and we also send to a certain category above a certain category of client. We send what do you call it, your birthday bouquets. You know, चंडीगढ़ में जो local है वो तो local भेजते हैं, otherwise जो outstation है उनको Ferns and Petals से भेजते हैं. So that is something which we do. We also do an anniversary card. We do an anniversary card. Then again, milestone achievement, we do it. Generally on a milestone achievement, we send them a card, plus we also send them a silver coin. A silver coin costs approximately $7. It's a printed silver coin. We got Sahayak Associates silver coins printed.
So that coin is there. So we generally send a silver coin. Then we have this daily message that we send out, daily calendar. Plus we do this monthly, weekly economic highlights and Sahayak times that we do monthly. So that is something which we do. Then we do an annual event for above a certain category of clients. We've not done it for the last 2 years because of COVID. But now again, this year in October, we are planning an annual event for our clients and for our prospects. So this is the kind of client engagement that we do. I'm sorry, we have a matrix that what we've done is based on the client category, what is the kind of engagement that we need to do with the client. So that is what we do. We send a Diwali gift to every client, but it differs in terms of value. But we do something different. We don't send dry fruits or any such thing. Like last year, what we had done was we had sent a happiness jar and a giving plate. So there was this giving plate which says that you pass it on. This I'll show. I'm sitting at home. Actually, it's lying in office. I'll share the images and everything, which says it pass it on. So there was a cake on it, and then there was a happiness jar which had some candies and everything. So the happiness jar it's a jar, and there's it's written on that every time you feel happy during the year, just put down on a note and put in that happiness jar. And whenever you feel sad, just open that happiness jar and pick out that note. And you'll feel, with the memory, you'll feel happy again. So that was something which was appreciated a lot by most of the people. So that is something which we do. So year before that, we had sent the tree of life. So we that was again a different kind of a gift. So we try and do a different gift. For this year, we are trying to develop the Wall Street Bull, a small Wall Street Bull which you can keep on your table. That, and we'll call it the Sahayak Bull, and we'll have a small note attached to that. That is what we're trying to send for Diwali to all our clients. So based on the size of the client, the size of the bull will differ. So that is what we are trying to do. So these are the kind of engagement activities that we do. But a lot of wonderful inputs have come in today. So that is something which, especially for newborn, we also trying to do something for newly married. We're developing a booklet for newly married, because I think that is, money is actually the major reason, where problems arise. So we're trying to see how we can do it. So apart from, other kind of infidelity, the financial infidelity is a very major thing. So I think this is something which we need to educate upon. So we're developing a booklet about this. So plus this newborn thing is a wonderful idea. I think we'll try and see how we can develop a small note and a booklet or something like that to go along with it. So this is what it is. I'll try and share all the details in the group once I reach office. All the hard copies we have of all the birthdays and everything. So vote karenge. Sandeep ji, on this very interesting thing about money among couples. Okay, yesterday I had a client meeting, and there was a discussion between the husband and wife कि ये Myntra पे बहुत खरीदती है, and she's like ये gadgets बहुत खरीदते हैं. So I said goal mapping करूंगी, एक Myntra का fund लगेगा, एक इसका fund लगेगा, gadgets का fund. Obviously, the amount going to the gadget fund will be more because his expense is going to be more on that. So right. How do you reconcile this between couples? That's very interesting. So this is very nice to get it at the beginning itself, at marriage time. Yeah. So I'll tell you, ma'am, see what happens. Typical cause of conflict is what, when one of the members is supporting the family or supporting a sibling, and he's not sharing it, he or she is not sharing it with the other member. That we've seen is a very major cause of a conflict. And another cause, I'll tell you, there are a lot of people, a lot of women I know who carry a pair of scissors in their purse, because when they go out and buy, they'll tear off the price tag, because they don't want their husband to see what they bought and how much they bought it for. So उसपे लड़ाई होने वाली है कि तू इतना पैसा क्यों खर्च कर रहे हो? So this is something which happens. So I think this is what we need to educate people about, and about, like I always say, couples spend more time discussing dinner dates and where to go out for dinner than discussing money, which is the most important thing. So the picture कौन सा देखना है या dinner पे कहाँ जाना है, वो ज़्यादा time लगते हैं उस पे. But
पैसे का क्या करना है वो बहुत जरूरी है और वो हम करते नहीं. So that is something which we need to educate people about. So we're trying to develop a booklet on this, on the complete financial education for newly married couples, and see how we can do that. So in fact, what we are trying to do is we're talking to a couple of AMCs also, that if we can do every 3 months, we can do IAP for newly married couples, you know, and educate them about financial planning. So we're getting a good response. Hopefully, we want to make it into an event every quarter. So the idea is to segment the entire thing and see which segment can you target the best. Okay, now I'll share. It is not at all structured. I do it haphazard way, but I do many things. Like first of all, sending messages. I have all clients and prospective clients broadcast list, and as soon as I come to know a person or like I'm engaged with them, so I add them to a new prospect list, and once he becomes a client, then other group I add to them. I send greetings from Network FP, some good messages from or videos from our NJ, and not marketing videos at all. Like new fund this that I don't send. लेकिन ये सब मैं ना स्टेटस में डालती रहती हूँ. स्टेटस में मैं और कुछ भी अच्छा लगता है, अच्छा जोक है, आई एम अ मेंबर ऑफ फिल्म सोसाइटी, तो वहां से जो पोस्टर्स आते हैं वो सब मैं डालती रहती हूँ. सो व्हाट हैपेंस दैट एंगेजमेंट इंक्रीजेस. वो सब देखने के लिए भी लोग देखते रहते हैं एंड दे कीप अप्रिशिएटिंग. तो ये एक होता है. स्पेशली ऑनबोर्डिंग मींस वन आई हैव ऑल द 3 प्रोडक्ट्स लाइक फाइनेंशियल प्लानिंग हो जाता है तो उसमें LIC भी आ जाता है फॉर लॉन्ग टर्म, देन म्यूचुअल फंड एंड हेल्थ इंश्योरेंस. तो हर एक के लिए मैंने एक अलग लेटर बनाया है और कवरिंग लेटर भी बनाया है फॉर वेलकम एंड ऑल. तो उसमें जो अलग अलग मैं लेटर देती हूँ उसमें व्हाट केयर यू हैव टू डू एंड आई सेट देयर एक्सपेक्टेशंस, राइट, स्पेशली हेल्थ इंश्योरेंस में हो एंड हाउ दे शुड फॉलो एवरीथिंग, ऑल दैट मैं उसमें लिख के देती हूँ. LIC एंड ऑल व्हाट आई डू, कि उनके पुराने भी पॉलिसीज है तो उसमें उनको मैं मदद करती हूँ. लेकिन होता क्या है, ओवर द पीरियड उनको लगता है वो पॉलिसी मैंने ही लिया है, और मैं सर्विस तो सबके लिए इतना देती हूँ कि लोगों को लगता है कि उसका कमीशन भी मुझे मिलता है. तो आजकल मैं लेटर में भी वो लिखने लगी हूँ कि मैं सर्विस दूंगी तो कमीशन उसी एजेंट को मिलने वाला है एंड आई एम जस्ट गिविंग सर्विस टू हेल्प यू. तो वो सब भी मुझे उसमें क्लियर करना पड़ता है. सो ऑल दिस 3 टाइप्स ऑफ लेटर्स आई गिव. और जब भी न्यू सब इन्वेस्टमेंट होती है तो ये फाइल के साथ जो म्यूचुअल फंड का होता है उसमें फिर ऐप कैसे डाउनलोड करना है एंड हाउ यू शुड फाइल द रिटर्न्स के टाइम आपको ये सब देना पड़ेगा. ऑल दोस इंस्ट्रक्शंस आई गिव देम एंड देन विद दैट आई गिव सम स्पेशल गिफ्ट अकॉर्डिंग टू देयर पर्सनालिटी, सम बुक और मोस्टली तो स्वीट्स का एक बॉक्स तो रहता है अपार्ट फ्रॉम द गिफ्ट. तो ये जब भी वेलकम होता है तभी देती हूँ. दिवाली में मैं जनरली नहीं देती हूँ और मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है कि मेरे जो कोई क्लाइंट्स है, आई शुड नॉट से HNI, लेकिन जो कॉर्पोरेट क्लाइंट्स है उनको ना गिफ्ट अच्छा नहीं लगता, ये भी मैंने देखा. तो जनरली आई गिव गिफ्ट टू ऑल. लाइक 25th एनिवर्सरी है, बच्चे का फर्स्ट बर्थडे है, उनका 10th एनिवर्सरी है, और लाइक 50th बर्थडे, 60th बर्थडे, ऐसा कुछ स्पेशल है तभी मैं देती हूँ गिफ्ट, और वो भी स्पेशल अकॉर्डिंग टू देयर पर्सनालिटी एंड चॉइस. तो गिफ्टिंग के बारे में ये करती हूँ. एंड मैं कभी कभी बुलेटिन्स करती थी. आई कुडंट बी रेगुलर. छोटा सा बुलेटिन PDF फाइल में भेजती थी एंड आई बिलीव इन फिजिकल ऑल्सो. तो वो फिजिकल प्रिंट आउट करके भी निकलती थी. वो थोड़ा रुक गया है. नाउ आई विल स्टार्ट दैट अगेन. एंड बर्थडे विश तो मैं जनरली व्हाट्सएप पे करती हूँ एंड आई कॉल देम मेनी टाइम्स. और ऑफिस से भी ऐसे कि ऑल द सर्विसिंग कॉल्स एंड एवरीथिंग गोज
they also wish birthday to them, or just I have instructed them ki abhi over the period, like my staff is also 2-3 people are old, 5-6 years, 15 years, so I tell them that you should जनरेट रिलेशनशिप विद देम, तो वो भी उनसे एक कैजुअल बात भी करते हैं, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, about their children and all. So we come to know the latest position also, like children are engaged in job or something. So again, that prospecting is also simultaneously happening. Plus I keep visiting, उस area में गई तो just I drop in. I don't talk anything about business. It comes from them only. क्या है नया, क्या है, क्या करना चाहिए. Otherwise review बहुत कम होता था मेरे से, but some or the other way I used to keep contacting people. लेकिन अभी थोड़ा रिव्यू भी मैंने रेगुलर शुरू किया है, जब से ये लॉकडाउन हुआ और सब सेशंस सुने, तो वी शुड डू रेगुलर रिव्यू, तो उसका भी, और सेग्रीगेशन ऑफ क्लाइंट्स, वो ऑल द थिंग्स आर इन प्रोसेस. एंड ऋषित का जो ये आइडिया है बर्थडे का बहुत अच्छा लगा मुझे भी अच्छा लगता है ग्रीटिंग भेजना, लेकिन मैं अभी वो रेगुलरली आई डेफिनेटली इम्प्लीमेंट है. And 2 things I am doing is like newborn baby, then I generally visit them with a gift. छोटे बच्चों का जो भी होता है अच्छा सा clothes and then some gifts. I visit them for a newborn baby. And newly married के लिए I give a letter, congratulations. और एक मैंने what you can say, एक ऐसे डिजाइन बनाया है like a road map, लेकिन बहुत अच्छा एक पिक्चर बनाया है कि आफ्टर मैरिज सो मेनी स्टेजेस यू हैव, घर लेना है, कार लेना है, ये करना है, बच्चे है, एजुकेशन है, मैरिज है, वो सब पिक्टोरियल ग्राफ बनाया है मैंने, वो भी उसमें इंक्लूड कर देती हूँ. प्लस 1 लेटर व्हाट so many things they have to do, like name change, gazette, nominations change, for so many things that you have to take care of all these things. And if you need any help, you can come to me. So definitely after some days they come for financial planning. तो ऐसे सब एक्टिविटीज है. Anyone else? दीप्ति का नहीं हुआ ना? No, ma'am, but so like Rohit ji mentioned, I also have handful of clients, so more or less I'm in touch with everyone. And what I follow is the WhatsApp group, which already a couple of them have mentioned that, you know, if wherever there is a family, generally I have a lot of couples as clients. So we do all interaction there, okay, relating to investments and everything. But again, and my broadcast is divided into 3 parts. One is for the existing clients, second is for prospects. But again, there I have divided based on gender, like male का अलग broadcast है, females का अलग broadcast है. And what I have been doing after the network FP directory has been created is that whenever I'm sending messages to prospects, I attach that link with the network FP directory, the profile which is created. So at least, so I've been doing that, and I mentioned that, you know, the LinkedIn and the website details are already, you know, mentioned on this link. So I'm not sharing LinkedIn and website details separately, but I share the network FP link quite frequently. And besides that, I'm not doing any gifting part, but I do the welcome message, you know, from the NJ MCS images that come. Okay, so I do that immediately once the eWealth account is opened. And then birthday wishes, I started doing calls after Mahesh ji suggested in the CRM session, and that has been helpful. And I share articles not just about wealth creation, but also you keep reading about these, you know, money scams and online scams. So I do send those kind of alerting articles as well that, you know, be careful. So yeah, so that's about it. Yeah, but lot of wonderful sharing and ideas today. I'm really grateful that I attended and all of you to openly share all of these things. Thank you, everyone. Yes, actually listening to all this, we can choose our Absolutely. I've made a program note of and the absolutely plan. everything. Every idea was like really brilliant, but I got dropped off in between. Maybe I missed 2, 3 things, but I've noted it and I'll share it on the group. So I mean, it's kind of bullet points of everything what shared. I've not written names. Maybe here or there I've written 1 or 2 names, but excuse me for those whose names I have not written, but it's just wonderful sharing today.
Yes. I have a question. ये जो हमारा हुआ था सेशन वो क्या था नेटवर्क एफपी का on converting videos into text and all that. I want to know if anybody has experimented with this digital Saturdays or any of the videos that NJ has, जो बाद में share करते हैं session के बाद में. Has anybody converted it into bullet points? इसने try किया है? When was this session? This was I think it's almost a month. Yeah, 3 to 4 weeks back. वो टेक वाला सेशन था, उन्होंने वो सब पॉइंट शेयर किया था कि वीडियो कैसे बनाना है या फिर how to convert a video session into bullet points, how to get the main points out of it, etc. So that was chargeable. That was chargeable. वो जो websites थी ना, that was chargeable. हाँ, but I think some of them he said were free also. I'm not very clear on that. I want to know if somebody is implemented and how we can do it, for this NJ wala thing. One thing I would like to share, as Priyanka was saying, in new and old tax regime. So I am also in touch with one corporate actually, and there we are planning to do a series of programs on investments and financial planning per se, different aspects of it. So in that they have said ki you do first session on tax regime only, because they said ki lot of their employees have the queries ke ye naya tax regime अच्छा है कि पुराना. So if we are starting anything on investments and insurance, let us start first session on new and old tax regime. So I feel it is a very good entry point to do the IAPs in corporates. So which we can start with maybe tax regime, and then maybe we can have subsequent sessions on investments, insurance, and all those retirement planning part. So I'm going to do that in next month, and then the subsequent sessions are planned month-wise. Okay. Let me just add one more thing. Like what we have done is we've allocated around 5% of our total income to CRM, to client engagement. So that is how we've structured it, and so that we can budget for it and we can see that we don't overshoot the budget also. So 5% of the total income, agar hum karenge, I think that is something which will be actually reinvesting for the future and for building long-term relationships. So that is a benchmark that possibly you can look at. That is for total marketing or these activities? CRM, and see, this is also a part of the marketing. इसी में मैम cover होने वाला है. Yes. So this is for basically for marketing and for CRM. Everyone is done. But great session today. Yes. Yeah, done. Good one. काफी कुछ insights मिला, different insights. Very good sharing. Yeah. Naina ji, you mentioned about that roadmap for married people. If you have any image or something, or if it's a soft copy, if you can please share. I'll share. Thank you. Share वो एक one page वाला तुम्हारा वो करो ना share. I think that's quite interesting. Which one? मैं share किया ना वो? नहीं तुम्हारा जो है ना वो introduction वाला one page था वो. हाँ मैं किया ना अपना ग्रुप पे किया हुआ है. केले आपका ग्रुप में शेयर किया. Okay, I'm sorry. I missed it. Yeah. Hello guys, then we'll have to leave. It was a great session catching up. Thank you everyone. Have a great Bye week ahead. everybody. Bye.